This is the formulation of a chemical some of us in Union Carbide call liquid dynamite. But you know of it as? Methyl isocyanate, sir. MIC. Worst industrial accident in history. दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैस हादसे. The suffering goes on as officials try to determine just what went wrong. पंदरपाट अत्याचार का फिरंगी का सरकार का पुकारता इंसान उतरा रंग न्याय की तलवार का व्यापार का ढोंग करने आया मौत का बाजार था अनजान था आम आदमी उसका मेहमानी बेमान था फैलाया शहर बनाया शहर को शमशान था गुमान क्यों आजादी का देश उस दिन भी गुलाम था फरमान था तबाही का जो सरहद रात में आया था झीलों का शहर अब तो बस लाशों का मैदान था सरकारें बन गई बहरी कानों में इतना मैल था आनंद फानंद सजा सुना दी गया नहीं कोई जेल था मजबूर रहा पर जिम्मेदारी किसकी थी ये तो बस कुछ प्यादे थे कोई बहुत बड़ा ये खेल था सन्नाटे के सवालों का जवाब हर कोई मांगता हत्यारे को ले जाने तैयार क्यों विमान था सोता था वो चैन की नींद यहाँ घुट रहा इंसान था मौत मिली क्यों उसे सुकून की जब तू था सब कुछ जानता. A cold, silent, dead winter night that was dominated by venom in its misty air. People ran chaotically down the street trying to fight for their eyesight, trying to breathe, trying to be at peace with their bodies, running towards nothingness in their desperation just to survive. Death did not see any religion, nor did it see any gender or caste. It was cold and ruthless. Bodies scattered on the roads, humanity was at war against itself. The worst industrial disaster known to mankind, the Bhopal gas tragedy, occurred on the night of the 2nd and the 3rd of December 1984. 40 tons of methyl isocyanate gas leaked from the Union Carbide factory, based right in the middle of the city. Lost lives, stillborn babies, and up to 3 generations of suffering. This is not understood by anyone but the one who saw it all, suffered it all, the people of the city of Bhopal. The next hearing is in April at the Supreme Court, where the victims of humanity will reek of hope once more. जहाँ का मंदिर था कि ये गलियों में लाशें थी मैंने खुद अपने बच्चों को चादर में लपेट के 11 महीने का था मेरा 4 साल का बेटा बिस्तर में छोड़ा मैंने वो 8 साल भर्ती रहा डॉक्टर कहने लगे नॉर्मल है जज कह रहा है नॉर्मल है तो मैंने कहा अगर नॉर्मल है तो ये बीमार क्यों हमें बहुत आवाजें आ रही भागो भागो बचाओ बचाओ हम लोग भी कह रहे हैं कि हम भागे हमारे देवर कह रहे नहीं भाग हमारी वो बच्ची थी 1 साल की वो भी बहुत तड़प रही हम लोग पूरे बहुत बिल्कुल मरने की उस पर कगार पर थे और अब कुछ नहीं कर पाओगे अगर करना है तो अभी जो अप्रैल में सुनवाई हो रही है भोपाल के 25,000 वालों को कुछ तो मिल जाए आप उठाओ आवाज अगर आप में हिम्मत है तो करो कदम से सरकार के ऊपर दबाओ. स्वाभिमान केंद्र खैरत नहीं रोजगार चाहिए quoted Abdul Jabbar, who is the founder of Swabhiman Kendra and is also an activist. Economic rehabilitation focuses on helping the upliftment of women who were victims to the Bhopal gas tragedy. Swabhiman Kendra has helped at least 5,000 women to get jobs to support their livelihood. आप ये देखिए मुआवजा सरकार को देना था वो नहीं दे पाई कार्बाइड को देना था वो नहीं दे पाई $470 मिलियन हमारी सरकार ने दिया जो पैसा सिर्फ 1,02,000 इंजरी और 3,000 डेथ के लिए और आप हैरान होंगे ये संख्या 2004 में निकली 5,74,000 इंजरी 1,02,000 का पैसा लिया और 15,274 लोगों की डेथ बताई इसका मतलब साफ है कहाँ 3,000 लोगों की डेथ बताएगी उसका कंपनसेशन लिया गया और कहाँ ये डेथ निकली 15,274. 93% of them have only gotten 25,000 rupees as compensation. That is 25,000 rupees for lifetime injuries, 25,000 rupees for a life of suffering. So survivors were never consulted on what would be an appropriate settlement. And the whole process of compensation was extremely flawed and was done to favor the corporation. So if I am a victim, I had to prove, the onus was on
me to prove that I am the victim. So we have like thousands and thousands of people who are semi-literate or illiterate, and they had to prove that they were gas victims. They had to show papers of the immediate aftermath, like medical papers. When people couldn't open their eyes, where were they going to get these papers from? Most of the survivors, basically, I would say 93% of them, the worst affected survivors got this 25,000 rupees as settlement. क्या भोपाल को इंसाफ मिला है? ना तो आज तक किसी को रोजगार मिला है, ना आज तक किसी को पुनर्वास हुआ है, ना किसी को कोई सही मुआवजा मिला है। 25,000 टोटल मुआवजा मिला है। 25,000 मुआवजा, कोई मुआवजा होता है पीड़ितों के लिए एक मजाक बना कर रख दिया, और जिसकी आने वाली 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई, और आगे भी हो सकता है कि आगे भी बर्बाद होते जाएं। तो ये क्या, इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारी सरकार जो है कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, दरवाजे खोल के रखें, आओ जहर फैलाओ, मारो और चले जाओ। हमारे यहाँ कोई नियम बना दिया है कि कोई मुआवजा नहीं मांगेंगे आपसे। तो हम लोगों की ज़िंदगी क्या है? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं कि ज़िंदगी जीना नहीं चाहते थे? So even 25,000 rupees is not a lump sum amount by any means. It was given over the course of 20 years. First it was 200 rupees every month. People were so sick that they would be they were taking money from loan sharks. People are in huge debt for medical sicknesses and for other problems. A lot of people could not work after the exposure. They lost their capacity to work. So because of that, they are in debt. तो मृतक परिवार को 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 25 हज़ार दिया। हमने इसका विरोध किया। हमने भारत सरकार को कहा कि आपने जो एक्ट बनाया है, रिलीफ एक्ट, अगर अमेरिका नहीं दे रहा है तो भारत सरकार वो आज तक नहीं। हमारी सरकार जो प्रदेश की थी उसमें पानी की शुद्ध व्यवस्था करी, हवा की शुद्ध व्यवस्था करी, गैस पीड़ितों के लिए हमने जो विधवाएं थी उनके मकान बनाए, उसमें भारत सरकार भी सहयोग है। हमने हॉस्पिटल खोले 15-20, ताकि कई पीढ़ियों तक ये बीमारी की असर रहेगी। उनका फ्री इलाज भोपाल में हो रहा है। बाबूलाल ढोर बुक्का बने थे गैस राहत मंत्री, बाबूलाल गौर नहीं, बाबूलाल ढोर। बाबूलाल गौर ने कहा कि एक दिन गैस निकला था, एक दिन बीमार हो गए, दूसरे दिन अच्छे हो गए। तो ये दुनिया का पैसा लगा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख ली भोपाल मेमोरियल, तो मास्टर लाल सिंह, तो कमला नेहरू, तो रसूल अहमद सिद्दीकी, तो साकिर अली। तो ये किस लिए? उसमें इलाज होना चाहिए। किसका? जब हम अच्छे हैं तो किसका इलाज होगा? भोपाल मेमोरियल में अब कोई डॉक्टर नहीं है। इतनी डेड बॉडी को डील करना, तो सबसे पहले फिर हमने डिसीजन लिया क्या कि अब डेड बॉडी को हम नाम से नहीं जानेंगे, नंबर से पहचाने जाएंगे। रीजन इज दैट कि वहाँ पर आदमी डेड बॉडी को छोड़कर भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए, और कुछ आदमियों को सड़क से उठा के ले आए थे। तो देयर आर सो मेनी डेड बॉडी व्हिच वर अननोन, देयर वर सो मेनी डेड बॉडी व्हिच वर नोन बट अनक्लेम्ड। Sambhavna Trust Clinic, a charitable trust run by doctors, scientists, writers and social workers. It was founded by Sathinath Sarangi. This hospital offers free treatments to all the victims of the Bhopal gas tragedy. Since the medical response remains the same, which is like symptomatic, not based on any information or research. भारत सरकार ने एक बड़ा अस्पताल करोड़ में खोला, जो सीरियस हार्ट अटैक है, किडनी फेल है, डायबिटिक है, आँख की रोशनी चली गई, उसका अब केवल गैस पीड़ित के कुछ परिवार जिनकी संतान है गैस अफेक्टेड होने के कारण उनको कैंसर की बीमारी है या हार्ट की है, डायबिटिक, वो चंद लोग। 500 बिस्तर का हॉस्पिटल बना, आज वो कबाड़ा बना हुआ पड़ा है। वहाँ किसी गैस पीड़ित को कोई इलाज नहीं मिलता है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट आप जाके देखेंगे खाली पड़े। Conservative estimate is about there are at least between 120 to 150,000 people today who are suffering from chronic illnesses as a result of their exposures back in '84. No, that's wrong. Everything is diagnosed. All the investigations have been done. Now,
if they say that that accident took place in 1984, those who were seriously ill, they are already dead. And if they are surviving today, we cannot classify them in seriously ill people. कभी नब्ज नहीं देखी, कभी उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया, कभी उन्होंने आला नहीं लगाया। इतने दूर अभी आप हॉस्पिटल चले जाइए, आपको डॉक्टर के पास मरीज खड़ा मिलेगा, सिर्फ नाम बताएगा, उसको पूरी दवा लिख के मिल जाएगी। उसे उन्हें नहीं मालूम कि इसको कौन सी बीमारी है। सर्दी जुकाम है तो वही दवा है, और अगर उसे कैंसर है तो वही दवा है, टीबी है तो वही दवा है, सब कुछ वही दवा चल रही है। ये यहाँ के हालात हैं। आज 34 साल से ये हालात बस से बदतर होते जा रहा है, सुधार होने के बजाय बिगाड़ हो रहा है। Methyl isocyanate, the gas that leaked, has a hazard rating of 4, which means that it causes permanent injury despite prompt treatment. And here was a situation in which people got no treatment at all. And yet, the governments and the systems that the government has set up has put 94% of the survivors in the category of temporary injury, that they had to go to the hospital for just one day, which is a complete lie. जगह जगह अफवाह उड़ने लग गया कि सोडियम थायोसल्फेट बनने से 1-2 आदमी मर गए। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भाई, इट्स शुड नॉट बी मैंडेटरी, जो डॉक्टर लगाना चाहता लगाए और जो मरीज लेना चाहे ले। और वो सबसे बड़ी गलती हुई हमारी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने जितने भी आदमी को लगाए थे, कम से कम 1,500-2 हज़ार आदमी को लगाए होंगे, अभी भी स्टिल दे आर वेल। Nonsense, all nonsense. Sodium thiosulfate did nothing. Sodium thiosulfate is given for cyanide poisoning, and cyanide poisoning kills immediately. You die within minutes. They had methyl isocyanate, which did not kill them immediately, except those who had a very heavy dose. N.P. Mishra is a crook. He's a crook. He was a scientific advisor of carbide, who was leading the battle against sodium thiosulfate. And there is evidence now that sodium thiosulfate was effective in detoxifying people's bodies. कुल मिलाकर इलाज का अगर मामला देखें तो ये कम बड़ी बात नहीं है कि 1 लाख लोग अब परमानेंट टोटल डिसेबल हैं, इतने अपाहिज हैं कि वो इलाज के लिए भी नहीं जा सकते। Once again, Chingari Trust, a non-profit organization, focuses on working with third generation that has been suffering because of the attack. These especially abled children are given free treatment at the trust, which includes physiotherapy, speech therapy, teaching, sign language, reading and writing. जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इतने कमजोर पैदा हो रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, दिमाग उनका काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं कर पाते। कई बच्चे तो 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। लंबे ऐसे बच्चों की जाने जा रही हैं जो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जी वो क्या रहा भोपाल में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ना ही इलाज सही मिला, आज तक लोग मरते गए, मगर जो बच्चे घायल हुए, जिससे ट्यूमर कैंसर, किडनी कैंसर, किडनी फेल होना और बच्चेदानी का कैंसर, ये उभर के सामने अब आ रही है, अभी भी आ रही है। जब उस वक्त तो जो हुआ, मगर अभी तक कम से कम भोपाल के अंदर रोज़ के 400-500 लोग जा रहे हैं इस मरज़ में, मगर सरकार की तरफ से आज तक ऐसा इलाज नहीं मिला कि जो के कामयाब हो, जो के जीवन बच सके। नहीं बचा, आज भी वही लोग भुगत रहे हैं। This contamination of groundwater is ongoing. It's finding a new victim every day, and nothing is being done about it. People in Bhopal survived the gas disaster are now being re-victimized by this second ongoing environmental disaster. आज जो 300 टन कचरा पड़ा हुआ है, 340 टन था, 40 टन पहुंचा दिया, 300 टन आज एक कमरे में बंद है, उसको वो पीतमपुर में ले जाना चाहते हैं और पीतमपुर को, इंदौर को भी बर्बाद करना चाहते हैं। इंदौर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा, रातों रात जाकर दबा रहे हैं, वहाँ पे जला रहे हैं। तो लोग, वहाँ के लोग भी इसी तरह से भुगतेंगे जो आज भोपाल के लोग भुगत रहे हैं। और कुछ नहीं है, राख का ढेर है। लेकिन हमारे पॉलिटिकली जो इसको आंदोलन चला रहे हैं, उनका उद्देश्य इसको अपना को जीवित रखने का, दो लीडर्स वो कह रहे हैं इसके अंदर जहर है। तो हमने तो ऐसा हाथ पकड़ के खूब मल लिया। आई वाज द गैस मिनिस्टर,
जहर होगा तो हमारा जल जाएगा ना, सर में लगा दिया। There is so much evidence that government officials, politicians, and scientific agencies of the government, if they did one thing consistently, it was to downplay the damage caused to the people and downplay the damage caused to the environment, and thus essentially protect the US corporations from legal liability. कई बार भारत सरकार नहीं चाहती है कि ये इसको रुकवाया जाए, मर रहा है मरने दो, या तो कीड़े मकोड़ों की तरह कीमत है इंसान की ज़िंदगी की, तो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसानों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है। लोग जहरीले, कम से कम उम्रें हो गई हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, जो वो पानी पी रहे हैं उनके हालात दिन पे दिन ख़राब हो रहे हैं, बस से बदतर हालात हो चुके हैं भोपाल के। लेकिन अगर आप मंत्रियों के पास जाएंगे, आप नेताओं के पास जाएंगे, आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, तो वो यही कहेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया है। तो बताइए सरकार ऊँट है, कब कौन से करवट बैठे, किसको मुआवजा दे? बड़े आदमियों को ही बड़ा बनाएगी, गरीबों को और मौत के मुंह में ढकेल देगी। सरकार वो है। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, क्या उन्हें इतना बड़ा विषय नहीं मालूम था? क्या उनके पास चिट्ठियां नहीं गई? इवन हमने स्वच्छता अभियान के तहत उनको ये चिट्ठी लिखी, कंटामिनेशन। क्या आप स्वच्छता की बात करते हैं, सब बात करते हैं, इतना बड़ा कंटामिनेशन भोपाल में। अमिताभ बच्चन, उनको भी लिखा और तमाम लोगों को लिखा, किसी ने कोई रिप्लाई। SP Chaudhary was the production manager of the Union Carbide's MIC plant. He is also one of the 8 Indians who have been accused for the Bhopal gas tragedy. His counsel, Anirban Roy, calls this incident a sabotage and not an accident. Their case claims that the CBI and the government carried out a poor investigation and knowingly did not look into the matter to suit their own interests. The Bhopal gas tragedy was a man-made tragedy. It is our case that water went inside the tank. It was an act of sabotage. It was a case of a deliberate direct infusion of water into the tank. Water did not get in because of any kind of design defect. So as against the case of Government of India, where they are trying to make out a case of a design defect which led to the incident, our case is that it was an act of sabotage which led to the incident. The last gas relief minister, Vishwas Sarang from the BJP that we had, so there have been crores of rupees that is still sitting under different thing, under to provide jobs, to provide pension and to other things, and because they're not able to do it, that he will ask for building roads and drains and parks and fitness centers in gas affected areas. And interestingly, what is the definition of gas affected area is the constituency from where he stands. In fact, his constituency doesn't even come in moderately gas affected areas. So this is because he was the minister and he got this plan developed that this is how the remaining 140 crores should be spent is to build drains and parks and roads in his constituency, and this got approval from the minister because cabinet approved this money for a completely different thing, and this got approval from the central government. He had to just write a letter to Anant Kumar. He's no more, but he wrote one letter and the funds were approved in principle, and it was only under RTI that we got this information and we saw that this is what is going to happen, and we brought it out into the public domain and we wrote to Ministry of Chemicals that how can you allow the money that is sanctioned for us very specific to provide jobs or to give social rehabilitation, how can you give this money to be building drains as if this city does not have a municipal corporation? Union Carbide India Limited, from whose premises this MIC escaped, was owned partially by Government of India. It was owned more than 50% by Union Carbide Corporation US, and about 25% of the stake was held by Government of India. One, the plant was very well designed. 2, we were not negligent. 3, the Government of India's case that it was a design defect which caused the incident is absolutely false and illusory. 4th, the actual cause of incident was an act of sabotage. And 5th, the CBI knowingly did not
put forth the case of sabotage. It parroted the case of the government of India as per the dictates of government of India. If you are born in the wrong class, like you're poor, if you're poor and if you're Muslim and low caste and sex worker and disabled, then you are the one who's going to get who are the most vulnerable in terms of corporate crime or industrial pollution. Then the lesson we get is you have a very, very, very slim chance of getting any support from your government, from your judiciary, from your scientific agencies, from academic institutions like yours, and or the media. The Swarajpuri case. The superintendent in 1984, now a retired IPS officer, who has been accused along with the collector of Bhopal, Moti Singh, for driving Warren Anderson, chairman of the Union Carbide factory, to the airport and putting him safely on a flight to Delhi. Mr. Arjun Singh, the CM, is on the line. Talk to him. He just told me, I know you are very ill, but it's urgent. Can you see me now? That is where we were told arrest Anderson. As I came in, Chief Secretary looked at me, Swaraj, अरे उसको छोड़ना है. किसको छोड़ना? उसको who? अरे वो Anderson को. You know, finally what he told me, he said, the choice is yours. Either you execute this government order, and you and your DM, the collector, Modi Singh was the collector. Two of you either execute this order, or tomorrow morning, you are placed under suspension, and somebody takes over charge and executes the order today. And that's how Anderson went. And these are government orders. घर में घुट घुट के जी रहे हैं, बैठे हैं, काम धंधा बनता नहीं है, आंखों में दिखता नहीं है, सांस साथ देती नहीं है, बैठे बैठे बस सिर्फ सांसें पूरी कर रहे हैं. वो कौन सा दिन हो के मौत आ जाए और हम इस दुनिया से चले जाएं, इसका इंतजार कर रहे हैं. और आने वाली हमारी जनरेशन को ये मिले कि जो लोग मोर्चा ले रहे थे यूनियन कार्बाइड से, कम कम उन्होंने ये नज़ीर बनवा दी कि आप कोई ऐसा करेगा तो वो छूटेगा नहीं, बचेगा. इन्वायरमेंट को जो डैमेज करेगा, हमारी हेल्थ को जो डैमेज करेगा, हमारे लोगों की जो जान है, उसको भोपाल के लोग या देश के लोग छोड़ने वाले नहीं. हम ये नज़ीर जो बना रहे हैं सिर्फ भोपाल के लिए नहीं बना रहे हैं, हम देश के लिए बना रहे हैं. और आज मेरी एक देश पीड़ित हूँ, मगर फिर भी दमदारी से जब तक मेरा जीवन है, जब तक लड़ूंगी. मर जाऊं तो भाई भोपाल के पीड़ित भी मुझे माफ कर दें. तो ये एक उमंग है कि उनको सजा मिलना चाहिए, और ये जो केस हम दायर कर रहे हैं तो सरकारों को पैरवी करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए सरकार को, और राहत देना चाहिए. अच्छे से अच्छा गैस राहत मंत्री को इलाज करना चाहिए. जहाँ जो कमियां हैं, पानी की, कचरे की, सफाई की, इसकी उसकी सबकी गौर करो, ताकि जो मरीज हैं तड़प तड़प के मर रहे हैं तो वो ये बदबू में और बीमार हो रहे हैं. काम करना चाहिए. हम काम चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, इलाज चाहते हैं सही. Bhopal was hit with two tragedies that day, the one that took place in 1984 and the one that's been unfolding in the later years. A city known for its external beauty, internally houses and wounds victims that make death and vandal look easy. Bhopal gas tragedy is relived every day by the victims. This is not about just one Bhopal gas tragedy, but about slow Bhopals that are happening every day across the country. So act up before the clock stops ticking altogether and it's midnight again and the greed of mankind takes the better of its conscience once again.